जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूछि समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम सेकेंड सेमेस्टर जो पेपर रही लर्निंग एंड टीचिंग रो तार यूनिट 1 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवो। तो टॉपिक रो ना हेउछि प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैला। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कोन ना एक्सप्लेन द कांसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग रो कांसेप्ट कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एवं तार प्रिंसिपल्स कोन आमे ताको जानिबो। तो समस्ते जानिचु लर्निंग माने कौन समस्त पाठ पढ़ुछन्ती माने समस्त तो जाना थिबो लर्निंग माने कौन। तो आमे जीवन रे माने जन्म हैला पाखरु आम मृत्यु पर्यंत आमे जीवन में किछि ना किछि शिखि थाउ बा ज्ञान आहरण करि थाउ। तो चलंतु आरंभ करिबा जे कांसेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग कौन concept of learning ना learning is an important phase of human life हैला। तो लर्निंग बा शिक्षण होछि हमर गोटे मानव जीवन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण फेज बोली कहि परिबा हम। इट इज ए बेसिक फैक्टर इन एजुकेशन। लर्निंग गोटे एजुकेशन बा शिक्षा प्रक्रिया रे लर्निंग गोटे बेसिक फैक्टर भली कार्य करे। इट इज ग्रोथ इन द एडाप्टेशन ऑफ बिहेवियर टू ए वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये आमर कौन ना आमर विभिन्न प्रकार जो परिस्थिति रही आमर आचरण को ये कौन करे ना आमर ये मॉडिफिकेशन करी थाए। देन लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स वेरिड एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस which have an important influence on the behavior of an individual। तो शिक्षण कौन ना शिक्षण होची गोटे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म गोटे विस्तृत शब्द है। ये कौन करे ना एवं ये कौन करे ना इट इंक्लूड्स वेरिड एक्टिविटीज ये विभिन्न प्रकार कार्यकलाप एंड एक्सपीरियंस एवं अभिज्ञता को कौन करे इंक्लूड्स करी थाए हैला। देन व्हिच हैव एन इंपोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जे कि हमर कौन करे ना गोटे व्यक्तिर तार आचरण उपरे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाई थाए। देन कौन देन हो डेफिनेशन तार संज्ञा कौन ना अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हैबिट्स एंड एटीट्यूड। तो क्रो एवं क्रो मतरे लर्निंग कौन शिक्षण होची गोटे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स को हमें बुझेबा हैला। देन कौन स्किनर को मतरे कौन ना लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। देन हो अकॉर्डिंग टू गेट्स को मतलब कौन ना लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो गेट्स को मतलब हो शिक्षा हो कौन शिक्षा हो गोटे आचरण परिवर्तन माने एक्सपीरियंस द्वारा आमर जो आचरण परिवर्तन होता है ताको आमे कौन कहू ना शिक्षण बोली कहि थाउ। देन हो अकॉर्डिंग टू मून लर्निंग इज मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिविटी स्पेशल ट्रेनिंग एंड और ऑब्जर्वेशंस। लर्निंग कौन ना शिक्षण हो आमर जो बिहेवियर रही बिहेवियर आमर आचरण है तो मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन है माने आमर शिक्षण हो आचरण अधिक किंबा कम आमर परमानेंट परिवर्तन जहाँकि आमर कौन कौन जहाँकि आमर किसी स्वतंत्र आमर ट्रेनिंग द्वारा बा आमर पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन द्वारा आमर कौन हुए ताको आमर हासिल करी हुए। देन कौन देन होचे आमर दोस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इनक्लूड्स द फॉलोइंग है। तो आमर जो शिक्षण प्रक्रिया रे निम्नलिखित गुड़िक आमर अंतर्भुक्त अछंती माने आमर शिक्षण प्रक्रिया रे कौन कौन गोटे होचे आमर एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस आमर नूतन अनुभूति को हासिल करिबा। देन आउ कौन ना रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशंस एंड स्किल्स। देन होचे डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। देन होचे सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन ए नोवेल पैटर्न कॉल्ड लर्निंग। तो यही सब आमर शिक्षण प्रक्रिया अंतर्भुक्त। देन पढ़ा आम तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सब ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग शिक्षार बा शिक्षणर साधारण वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन ना द फॉलोइंग आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट हो कौन ना लर्निंग इज प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। तो आमर शिक्षण हो कौन ना आम आचरण रे गोटे प्रोग्रेसिव बा प्रगतिशील परिवर्तन को
बुझाए। देन कौन ना लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग होउची हमर एडजस्टमेंट, लर्निंग इज ग्रोथ माने अभिवृद्धि, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, ये हमर अभिज्ञतार आयोजन करते। देन कौन लर्निंग इज कंटिन्यूअस, ये शिक्षण होउची निरंतर। देन लर्निंग इज पर्पसफुल, शिक्षण होउची हमर उद्देश्यमूलक। लर्निंग इज नीड बेस्ड, हमर शिक्षण होउची हमर आवश्यक भित्तिक। देन होउची लर्निंग इज यूनिवर्सल, ये होउची हमर यूनिवर्सल। लर्निंग इज एक्टिव, सक्रिय अटे। लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, शिक्षण होउची हमर बुद्धिमान एवं सृजनशील अटे। देन होउची हमर लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ लर्नर्स, ये हमर शिक्षार्थी मानकर आचरण को परिवर्तन करिता। देन होउची लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, शिक्षा होउची हमर गोटे परिवेशर प्रोडक्ट बा उत्पाद भाव कार्य करे। देन होउची लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, हमर शिक्षण होउची स्थानांतर योग्य। तो एही सब रहिला हमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। देन आमे पढिबा हमर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, शिक्षण नीति गुड़िक कौन कौन। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, फर्स्ट कौन ना लर्निंग इज ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, विदाउट इट लाइफ कैन नॉट एक्जिस्ट एंड नो प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस। तो शिक्षण होउची बा शिक्षा होउची गोटे जीवनर गोटे फंडामेंटल प्रोसेस है, मौलिक प्रक्रिया जहाँकि एवं गोटे शिक्षा माने विदाउट इट माने विदाउट लर्निंग बा विदाउट शिक्षा लाइफ कैन नॉट बी एक्सिट, आमर गोटे जीवन आमर विद्यमान हो पारिबो नाही एवं नो प्रोग्रेस कैन टेक प्लेस, एवं आमर कोनोसी अग्रगति हो पारिबो नाही। देन कोन ना लर्निंग अफेक्ट्स ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर, मे बी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, फियर्स इटीसी, माने ये आमर कोन करे आचरणर समस्त लर्निंग कौन करे ना आमर जो ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर को ये कौन करे अफेक्ट करे, जेमति कि आमर हो स्किल्स हो, नॉलेज हो, एटीट्यूड्स हो, पर्सनालिटी हो, मोटिवेशन हो, फियर हो, ये सब ये कौन कोन आमर प्रभावित करि थाए। देन कोन ना लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटीन्यूअस टिल डेथ, ये होउची गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस एवं ये आमर जन्म रु मरिबा पर्यंत चली थाए। देन कोन देन होउची लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, माने ये आमर उद्देश्यमूलक एवं एवं लक्ष्य निर्देशित। देन कौन ना लर्निंग इज चेंज इन रेस्पॉन्स और बिहेवियर, मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल है। शिक्षण होउछु आमर कौन आमर जो रेस्पॉन्स रही बा प्रतिक्रिया रही तार किंबा आमर जो बिहेवियर रही आचरण तार परिवर्तन को कहा जाए। ये कौन हो पारे, ये आइदर अनुकूल हो पारे एवं प्रतिकूल मध्य हो पारे। देन कौन आमर लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, आमर ये आउ कौन सम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस सहित इन्वॉल्व। लर्निंग इज कॉज्ड पार्शियली और होली बाय एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग, आमर शिक्षण कौन किसी तालीम द्वारा आमर कौन होता है आम शिक्षा लाभ करता। देन हो लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, माने आमर लर्निंग को द्वारा किसी कॉन्शियस एवं अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस द्वारा आमर लर्निंग डिटरमाइंड हो पारि थाए। देन हो लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ चेंज नॉट ए प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर है। Then how to learning takes place when an organism reacts in a situation. Then how to learning is the result of individual's activity. Learning is a creative experience. Learning is universal. Learning is motivated. Then how to हमारा learning is total reaction of the individual to total situations. A learning can be transferable, या आमर कोन स्थानांतर करि जाई परिबो। देन हो learning is not a product, attitude, fears, gestures, motor skills, language skills etc हैला। ये आमर कोन ये नॉट ए प्रोडक्ट, ये आमर गोटे उत्पादन नुहे कहार ना आमर एटीट्यूड्स, फियर्स बा गेस्चर्स, मोटर स्किल्स बा लैंग्वेज एई मानकर। देन हो लर्निंग टेक्स प्लेस इन बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सिचुएशंस। लर्निंग इज मल्टीपल लाइक वर्बल स्किल्स, मोटर कॉन्सेप्चुअल, परसेप्चुअल। देन हो लर्निंग मे बी राइट और रॉन्ग, डिजायरेबल और नॉट डिजायरेबल। तो यही सब रहिला आमर लर्निंग रो तार प्रिंसिपल्स गुडिक बुझी होची। देन पढिबा हमें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। देन होची हमरो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। हमरो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग विषय पढिबा त लर्निंग रो प्रकार गुडिक कोन कोन सब रहिछि। फर्स्ट होची कोन ना लर्निंग टेक्स प्लेस ऑन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव प्लान्स, माने हमरो शिक्षण हमरो ज्ञानगत एवं अफेक्टिव प्रभावशाली एवं कॉग्निटिव प्लान्स माने गठनमूलक
ବିମାନର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ thus acquisition of knowledge is cognitive, modification of behavior or emotions is affective, and acquisition of skills and habits is cognitive. Then होचु learning has been classified in various categories. ଆମର learning को विभिन्न प्रकारର various categories ରେ ଆମର divide କରାଯାଇଛି as learning of motor skills, learning of motor skill, verbal learning, affective learning and cognitive learning. ଏହି ସବୁ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ learning को classified କରିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ Gagné has classified learning into 8 types in hierarchical order they are। माने गागन कौन करछंती ना शिक्षण को क्रमानुक्रमिक क्रमरे 8 प्रकार रे विभक्त करछंती ना कौन गोटे होछ हमर सिग्नल लर्निंग, देन होछ एसआर लर्निंग, देन होछ चेन लर्निंग, देन होछ वर्बल एसोसिएट लर्निंग, देन होछ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको आपण माने कौन करिवे ना टाइप्स ऑफ लर्निंग करिकी ताकू डायग्राम मध्य एमती करिकी मध्य करि परिबे बुझी होची। तो हमर डायग्राम वीडियो मध्य नेक्स्ट रे आसीबो, एटा बस आपण लिखि नियंतु देन पढिबा। फर्स्ट सब टाइप्स वीडियो पढिबा। फर्स्ट हो आमर सिग्नल लर्निंग है। सिग्नल लर्निंग कौन ना इट इज कॉमनली टर्म्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग है। या साधारणतः आमर क्लासिकल कंडीशनिंग कह जाए ना। या किए बाहर करते ना रूसियन साइकोलॉजिस्ट पावलोव डेवलप्ड द थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आम जानिछु जो क्लासिकल कंडीशनिंग को आमर पावलोव डेवलप करथिले। देन होचु इन क्लासिकल कंडीशनिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस बा फूड एंड कंडीशनिंग स्टिमुलस आर paired together and presented to the dog a number of times with the result। तो ये जो कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी टा हमें यूनिट 2 रे पूरा डिटेल्स पढ़िबो। तो एटा जानि नै था। देन हो जो दिस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैन कॉजिंग सैलिवेशन टू द साउंड ऑफ द बेल इज कॉल्ड कंडीशनिंग। किभली गोटे कुकुर को माने अछि एटा ए विषय हमें नेक्स्ट यूनिट 2 रे हमें भलो की पढ़िबा बुझी होची। देन कोन देन हो जो हमर एसआर लर्निंग कोन एसआर लर्निंग हो जो इन ऑपरेट conditioning the puzzle box experience on course by Thorndike and a series of experiments conducted by B.F. Skinner। Skinner को द्वारा इटा ऑपरेंट स्किनर टा हेतला on animals prepared the ground for use of the principles of instrument। then हो जो then आउट टाइप्स हो जो चेन लर्निंग। चेन लर्निंग माने होछ हमर श्रृंखला शिक्षा। या होछ हमर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेनिंग दुई प्रकार गोटे होछ मोटर एंड गोटे होछ वर्बल। तो motor kono na chaining means the connection of a set of individual means the connection of a set of individual माने SR frequently x turning on TV set है। श्रृंखला अर्थ हो माने गोटे व्यक्तिगत सेट रो माने संजोग को हम कहबा है। ये मध्ये हमर कोन कोन बा SR जो सेट रही छै तार मध्ये संजोग को बुझे। देन हमर टू टाइप्स गोटे होछ वर्बल चेनिंग आउट होछ मोटर चेनिंग। देन कोन हमर ना वर्बल एसोसिएटेड verbal associated learning गोटे होचु ये होचु ये verbal chain is illustrated in the activity of naming type एटा दरकार हेता है। गोटे होचु जेमितिका बुझी होतबा। देन होचु multiple discrimination, देन होचु learning of concepts, देन कोन ना learning of principles, देन होचु problem solving। तो ए सब रहिला हमर types of learning। देन एबे हमें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढिबा। जे राइट अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो आमर लर्निंग को सब फैक्टर्स गुड़िक इन्फ्लुएंस करती प्रभावित करती आम पढ़ा। तो there are some agent which have direct interference with learning। तो किछि एजेंट अछंती जे माने कि हमर लर्निंग रे बा शिक्षण प्रोसेस रे प्रत्यक्ष भाव रे हस्तक्षेप करंती। देन क्लासरूम लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमर जो क्लासरूम लर्निंग रही छी हमर अनेक प्रकार रो फैक्टर्स गुडी के द्वारा हमर प्रभावित होय थाए। तो there are different approaches to classify these factors। एही गुडी को एही कारण गुडी को श्रेणीभुक्त करिबा पई हमर विभिन्न प्रकार रो अप्रोचेस रही छी। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो से फैक्टर शिक्षण को प्रभावित करुतबा व्यापक कारण गुड़िक कौन कौन रहिला ना। फास्ट हो जो हमर
फास्ट हूँ आमर साइकोलॉजिकल फैक्टर माने आमर शारीरिक कारक है जमीक आमर हो द ऑर्गेनिज्म एंड प्रिसेप्शंस हो ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स फैटिग्यू टाइम ऑफ डे एंड लर्निंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ड्रग्स अल्कोहल्स कैफीन टोबैको सेक्स डिफरेंस इन फैटिग्यू एक मोटिवेशन इंटेलिजेंस यही सब आमर कौन कौन ना साइकोलॉजिकल फैक्टर बा शारीरिक कारक गुड़िक जो गुड़िक आमर कौन करती ना आमर शिक्षण को प्रभावित करती देन कौन देन हूँ आमर पेडागोजिक मेथड पेडागोजिक मेथड ना यूज ऑफ मेथड इन लर्निंग आम जो सब लर्निंग प्रोसेस रे आम जो सब मेथड गुड़िक प्रभाव माने यूज करूँ तो से गुड़िक किछिटा आमर कौन करता है आमर शिक्षण को प्रभावित करता है देन कौन ना आमर एनवायरमेंटल फैक्टर्स द एनवायरमेंटल टू व्हिच द इंडिविजुअल बिलोंग्स इज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लर्निंग तो व्यक्तिर आमर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कौन करे ना द एनवायरमेंटल टू व्हिच द इंडिविजुअल बिलोंग्स इज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल लर्निंग आमर जो व्यक्तिर परिवेश रही सी कौन करे ना व्यक्तिर शिक्षण उपर कौन करे ना प्रभाव पकई थाए तो माने जेमितिका एनवायरमेंट रे गोटे पिला बढ़ुथिबो तो सेही भली एनवायरमेंट रे तार जो शिक्षा को ग्रहण करिवार प्रक्रिया हो का विभिन्न प्रकार हो सेते भल होता है तो बुझे तो देन हूँ कंडुसिव एंड कंजेनियल एनवायरमेंट वेयर द इंडिविजुअल गेट सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टिव और बायोलॉजिकल ऑर्ड्स लाइक एक्विजिशन मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंस वेरिफिकेशन इट इज एंश्योर प्रॉपर लर्निंग तो कौन करे आमर जो अनुकूल बा आमर कंडीसिव बा कंजेनियल एनवायरमेंट गोटे अनुकूल एवं जन्मगत परिवेश यदि ठीक रही सी कौन करे आमर शिक्षण को कौन करे आउ टिके अधिक सफल करें देन हूँ आमर मोटिवेशन फैक्टर मोटिवेशन फैक्टर माने प्रेरणा किछिटा मोटिवेशन फैक्टर जदि क्लास रे पिला मानको किछि रिवार्ड हो बा किछि पनिशमेंट द्वारा आमे मध्ये कोन करि परिबा ना पिला मानको मोटिवेट करिकि आमे कोन करि परिबा शिक्षण को आहुरी अधिक उपकृत करि परिबा तो ए मोटिवेशन फैक्टर मध्ये कोन ना गोटे हमरो फैक्टर भाबा गोटे फैक्टर्स कौन करे आमर शिक्षण को प्रभावित करें देन कौन आमर पर्सनल फैक्टर्स आमर व्यक्तिगत कारण गुड़िक कौन करता ना आमर शिक्षण में बाधा सृष्टि करता है जमीक सर्टेन फिजिकल डिफॉर्मिटीज आल्सो एब्स्ट्रक्ट द लर्नर स्पेस ऑफ लर्निंग माने आमर केतक शारीरिक विकृति कौन करे ना शिक्षार्थी शिक्षार गति को कौन करता है ना बाधा देता है तो व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न एज पर द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल तो जितेबाला से गोटे जिनिस गुड़ी को माने व्यक्तिर उद्देश्य एवं इच्छा अनुसार मिले ना तो कौन हुए शिक्षार गति शिक्षणटा प्रभावित शिक्षणटा मंथर गति चलता है तो ही ऑल्सो फेसेस ट्रबल इन लर्निंग तो से कौन करे ना विभिन्न प्रकार असुविधा कौन करता है ना सम्मुखीन होता है देन हूँ मैचुरेशनल फैक्टर्स तो परिपक्वता कारण गुड़िक आमर कौन होता है ना आमर शिक्षण को प्रभावित करता है तो यही सब फैक्टर्स रहा जो गुड़िक आमर शिक्षण को प्रभावित करते देन आम पढ़ा डिफाइन एटेंशन एटेंशन माने कौन आपण मानू समस्त को जाना थिबो एटेंशन माने होछु ध्यान तो आरंभ करिबा तो एटेंशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटी एंड प्लेज यूजफुल रोल इन अ डे टू डे लाइफ तो ध्यान गण बा एटेंशन होछु हमर गोटे मेंटल एक्टिविटी बा मानसिक कार्यकलाप गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग जी कि आमर कौन ना दैनंदिन जीवन में आमर ये कौन गोटे उपयोगी भूमिका भाव माने भूमिका ग्रहण करें देन कौन ना इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अटेंशन इज द मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग तो आमर जो शिक्षादान प्रणाली रे बा प्रक्रिया रे ध्यान होची बा अटेंशन होची गोटे शिक्षार गोटे मुख्य उत्स देन होछु डेफिनेशन देन पढ़ा डेफिनेशन कौन संज्ञा कौन किए ना अकॉर्डिंग टू रॉस एटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड तो ध्यान होची गोटे देन हूँ डेफिनेशन कौन ना अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड देन हूँ अकॉर्डिंग टू डेक्स एंड नाइट अटेंशन इज द सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द नाइट माने ये हूँ आमर मनर गोटे सिलेक्टिव एक्टिव देन हूँ आमर ना अटेंशन देन हूँ आउ गोटे डेफिनेशन हूँ अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड स्कल्सबर्ग कौन अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आमर ये हूँ आमर गोटे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड
କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର Woodruff and Skolvanger. So from the above definition, it is clear that focusing, concentration, and selection and clearness are important elements of attention. तो attention रो important elements गुड़िक कौन कौन ना focus करिबा, concentration करिबा, selection करिबा एवं clearness होउछु हमरो attention रो important elements गुड़िक. Then पढ़िबा characteristics बा तार attention कौन सब गुण रही कौन रही ना characteristics of attention ना attention is selective ये हूँ आमर selective अटे attention is constantly shifting from one object to another ये कौन करे ना गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु को स्थानांतरित हुए देन हूँ attention implies knowing feeling and doing माने attention हूँ आमर जानिबा अनुभव करिबा एवं कार्य करिबा को बुझाए देन हूँ attention is motivated by some purpose in the object or activity which we attend to ये आमर कौन करे ना गोटे attention होउछु आमर गोटे वस्तु किंबा कार्यकलापर किछि उद्देश्य द्वारा परित होइथे प्रेरित होइता जहा को हमें कौन करथाउ जे आमे अटेंड करथाउ देन होछु attention is a narrow range देन होछु attention is generally aroused by new stimuli हैला ये आमर नूतन उत्साह द्वारा जागृत होता है देन होछु attention is accompanied by motor adjustment हैला ये motor adjustment सहित आसी है देन पढ़िबा हमें kinds of attention आमर attention केते प्रकार जानिबा on the basis of two kinds of interest अनुसार हमको दुई भाग रे प्रयुक्त करा हिची attention को गोटे होछु नॉन वॉलंटरी attention देन होछु वॉलंटरी attention सेही बोली नॉन वॉलंटरी attention को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा हिची गोटे ला स्पॉन्टेनियस आ गोटे ला फोर्स्ड सेही बोली वॉलंटरी attention को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा हिची गोटे होछु एफर्टफुल गोटे होछु एफर्टलेस तो पास जानिबा हमें नॉन वॉलंटरी कोन नॉन वॉलंटरी होची अणस्वेच्छाकृत जो ध्यान बोली कहबा ना इट इज बेस्ड ऑन आवर नेचुरल इंटरेस्ट एंड इंस्टिंक्ट्स आर इट्स बेसिस यह हमर कोन प्राकृतिक इंटरेस्ट माने हमर नेचुरल इंटरेस्ट ऊपर आधारित एवं यह हमर इंस्टिंक्ट आर इट्स बेसिस एवं यह हमर प्रवृत्ति आर आधार अटेकला व्हेन ए चाइल्ड फॉरगेट्स हंगर एंड थर्स्ट एंड गेट्स एंगेज्ड इन प्ले इंस्टिंक्ट इज वर्किंग बिहाइंड हिज अटेंशन गोटे जेतेबेले गोटे शिशु को भोक लागि थाए बा शोष लगी था से जिते खेल माने लगी जाए ना से सब भोक हो बा ताको शोष हो से सब भूली जाए तो एटा है कम माने यही जो अटेंशन टा रहा से कार्य दिए देन हूँ जो मदर्स अटेंशन स्पॉन्टेनियसली गोज टुवर्ड्स हर चाइल्ड द मोमेंट सी बियर्स हिम यूपिंग तो मार ध्यान से कौन हुए ना पिलांकर कांदिबा ये आड़ को शुणिकी पिला आड़ को जाए देन हूँ जो नॉट वॉलंटरी फोर्स्ड अटेंशन माने अणस्वेच्छाकृत बाध्यतामूलक ध्यान ये कौन इट इज द रिजल्ट ऑफ सम फोर्स्ड स्टिमुलस यह किछि बाध्यतामूलक उत्साह कौन कौन ये फलाफल इफ सम अनप्लेजेंट साउंड इज हियर्ड व्हाइल यू आर एंगेज्ड इन योर वर्क योर अटेंशन ऑटोमेटिकली गोज टुवर्ड्स इट जदि आमे किछि गोटे कार्य रे आमे जदि लागिक रोचे जदि आमे सेही कार्य लागिला बेले किछि अन्य कथा किछि अन्य आड़ू आम किसी साउंड शुणिदेलु ताले आम मनटा कौन हुए से कार्य एभॉइड होगी जो साउंडटा शुणाला से आड़ को जाए तो यहाँ को आम कौन कहू ना नॉन वॉलंटरी फोर्स्ड अटेंशन बोली कहलु देन हूँ आमर वॉलंटरी सेटा हला नॉन वॉलंटरी देन आम आसवा वॉलंटरी कौन ना स्वेच्छासेवी माने स्वेच्छाकृत अटेंशन है जोटा कि आमर भितर ही आसता है ना इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्वार्ड इंटरेस्ट यह आमर एक्वार्ड इंटरेस्ट द्वारा ही ऊपर ही आधारित देन जो ये हूँ आम दुई प्रकार आम जाचु गोटे हूँ इफर्टफुल अटेंशन आ गोटे हूँ इफर्टलेस वॉलंटरी इफर्टफुल अटेंशन कौन ना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर accomplished by the kind of attention we may not be interested in solving a difficult problem still we want to do it a student should be encouraged to develop the power of volunteering effortful attention माने ये कौन ना आमर अधिकांश जिनिस यही प्रकार अटेंशन द्वारा आमर कौन हुए माने आमर कंप्लीट होता है तो आम गोटे पिलार तार यही भली वॉलंटरी इफर्टलेस माने वॉलंटरी इफर्टलेस अटेंशन को आम डेभलप करबा उचित जहाँ द्वारा से माने कौन करेंगे ना विभिन्न प्रकार समस्या समाधान करेंगे है देन हूँ आमर वॉलंटरी इफर्टलेस कौन ना इफर्टलेस हूँ आमर दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इफर्टफुल अटेंशन जो इफर्टफुल अटेंशन रो तार
प्रत्यक्ष फलाफल हूँ आमर वॉल्यूंटरी इफर्टलेस अटेंशन देन हूँ वॉल्यूंटरी इफर्टलेस अटेंशन इज पॉसिबल ड्यू टू ए चेंज इन नेचर हैबिट एंड सेंटिमेंट जदि आमर नेचर हैबिट ऑफ सेंटिमेंट को आम परिवर्तन करें वॉल्यूंटरी इफर्टलेस अटेंशन को आम कौन कर आनी पारिबा बुझे देन देन कौन ना देन हूँ हाउ टू सिक्योर अटेंशन तो आम कि भाव में अटेंशन को सिक्योर कर ना कौन ना द साइकोलॉजी ऑफ अटेंशन हैज इट्स straight origin in the psychology of interest. Attention like interest has important educational implications. Many a time the teacher is faced within the problem finding his pupils inattentive तो बहुत किसी प्रोब्लेम रही जितेबाला गोटे टीचर कौन करे ना प्रोब्लेम फेस करे तार पुपिल्स पाकर इनअटेंटिव को पाइबापी कौन फास्ट हूँ कि भाव में आम करिपरिबा ना मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग किभଳି भाବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ को बढ़ाइबा ना फास्ट कौन करबा ना मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग हैला जो जहाँ जिनस अछि ताको जहाँ आमे पढू सेटा किभଳି भाବରେ इंटरेस्टिंग करबा जहाँ द्वारा पिलाମାନଙ୍କର आटेंशन ता ही सेही पढ़ारे ही रहइबो एंड चाइल्ड्स अटेंशन विल बी इनवाइटेड इजीली देन हाउ टू मेक चिल्ड्रन डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल दैट विल फोकस देयर अटेंशन ऑन द पर्टिकुलर एक्टिविटी बुझौछि देन कोनो चाइल्ड अटेंशन इज जनरली पैसिव to make it active use audio visual aids when we necessary तो ऑडियो विजुअल एड्स को आम जिते दरकार हो कौन करवा दरकार ना ताको इम्प्लीमेंट करवा दरकार जहाँ द्वारा पिलामानकर अटेंशन को आम वृद्धि कर देन कौन Teachers' purpose in teaching should be clearly in view. It should highlight child's need. Then who to introduce variety and activity in the methods and subject matter of teaching. तो teaching process रे विभिन्न प्रकार मेथड्स को आम कौन करवा दरकार एवं एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवा दरकार जहाँ द्वारा पिलामानकर अटेंशन वृद्धि हम देन हूँ टीचर्स एटीट्यूड इज वेरी इंपोर्टेंट ही शुड बी सिंपैथेटिक एंड काइंड ही शुड अवॉइड गेटिंग इरिटेटेड इवन व्हेन certain pupils are inattentive हैला तो यही सब रहिला आमर कौन हाउ टू सिक्योर अटेंशन बुझी देन पढ़ा आम सेंसेशन डिफाइन सेंसेशन सेंसेशन कौन ना मैन इज ब्लेस्ड विथ ए नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स है आमर मनीष मानकर मैन इज ब्लेस्ड है मनीष कौन आशीर्वाद प्राप्त कौन विभिन्न माने मनीष मानकर विभिन्न प्रकार इंद्रिय रही जहाद्वारा से कौन करती जहाद्वारा से अंग गुड़िक द्वारा सी देखा हो शुणा हो स्पर्श करवा हो गंध कर ये कौन कर साहाय्य करे माने दीज ऑर्गन्स हेल्प हिम टू सी हियर टेस्ट टच एंड स्मेल द सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंप्रेशंस ऑफ द थिंग्स फाउंड इन दी आउटर वर्ल्ड तो यही इंद्रिय गुड़िक कौन करती ना आमर जो आउटर वर्ल्ड रे जो सब जिनस गुड़िक अच्छा विषय यही इंद्रिय गुड़िक द्वारा आम कौन जानी तो दीज इंप्रेशंस आर नोन एज सेंसेशन तो यही जो प्रभाव गुड़िक रही आम कौन कहू ना सेंसेशन भाव में जानू तो सेंसेशन आर द मोस्ट एलिमेंटरी प्रोसेस which are necessary for कग्निशन तो यही जो संवेदनशीलता बा सेंसेशन होउछि हमरो कोन सबुठार प्राथमिक प्रक्रिया जहाँ ज्ञान पाई हमर कोन आवश्यक देयर आर रॉ मटेरियल्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड तो सेगुड़िक होउछन्ति कोन हमर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड विषय रे जानिबा पाई बा ज्ञान रो गोटे गोटे रॉ मटेरियल भाव में कार्य करंती देन कोन ना दे आर द सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस हैला सेगुड़िक कोन हमर जो कॉन्शियसनेस रो गोटे सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स देन होछि हमर ए सेंसेशन cannot be reduced to any simpler in ingredients then how to sensation defined the term sensation has been defined variously what is an essential act of sense organ a simple mental process medium of contact with the external world तो सेंसेस को विभिन्न भाव में व्याख्या कराई ना कौन ये हूँ आमर गोटे अंग पाई ये गोटे जरूरी देन हूँ ये हूँ आमर गोटे सरल मानसिक प्रक्रिया आउ ये कौन आमर मीडिया ऑफ कांटेक्ट विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड माने एक्सटर्नल बा बाह्य जगत सहित ये गोटे मीडियम ऑफ कांटेक्ट भाव में कार्य करके ना आमर सेंसेशन तो सेंसेशन कौन सेंसेशन एज ए मेंटल प्रोसेस कैन बी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड एज फर्स्ट हूँ आमर सेंस ऑर्गन एटी हूँ आमर एक्सटर्नल वर्ल्ड रिएक्शन स्टिमुलस कॉस्ट
बुझी तो यहाँ हूँ तार डायग्राम देन हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आमर सेंसेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तार गुण कौन फास्ट हूँ आम क्वालिटी रही दरकार देन हूँ इंटेंसिटी देन हूँ ड्यूरेशन देन हूँ एक्सटेंसिटी यही सब गुड़िक हूँ आमर सेंसेशन रो तार वैशिष्ट्य गुड़िक बुझी देन आम पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंसेशन है सेंसेशन केते प्रकार ना आमर मेन इज ब्लेस्ड विथ 5 इंपोर्टेंट सेंस आम जानलु इच ऑफ दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन एज ए सन बिलो तो सेंसेशन केते प्रकार ना 5 प्रकार गोटे आई रो कौन ना आम विजुअल बा देखि पारू इयर रो कौन ऑडिटरी बा सुनी पारू नोज होचु ऑल्फैक्टरी टंग रहउचु गैस्ट्रुटरी स्किन होचु आमर टैक्चुअल बा कटोमियस बुझी तो विजुअल द्वारा आम आखि द्वारा कौन करूँ आम सब प्रकार जिनस को देखिपार तो युवाक हूँ टाइप्स समस्ते देखी नियो एटा तो समस्त को जना थी बुझार किसी आवश्यकता ना विजुअल सेंसेशन देन हूँ ऑडिटरी एडिटरी आमर आमर जो इयर्स रही इयर्स आमर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स द्वारा गठित कौन गोटे हूँ एक्सटर्नल इयर गोटे हूँ मिडिल इयर आउ गोटे इनर इयर द्वारा है आउ देन हूँ ऑल्फैक्टरी स्मेल सेंसेशन आम जहाँ नाक द्वारा आम कौन करूँ सब जिन को आम सूंघी पारि था देन हूँ गैस्ट्रोटरी आम टेस्ट बा जीभ द्वारा आम सब किसी कौन टेस्ट कर पारि था देन हूँ आमर टैक्चुअल और कोटानियस आम जहाँ द्वारा आम स्पर्श कर पारि स्किन द्वारा स्किन है यही सब आम रहा आउ अदर सेंसेशन रही बुझी देन पढ़ा आम परसेप्शन माने कौन ना धारणा ना ह्यूमन एक्सपीरियंस अकर्स इन 3 लेवल्स गोटे हूँ नोइंग फीलिंग एंड विलिंग और डूइंग आम जो मानवर एक्सपीरियंस अभिज्ञता रही है 3टी स्तर घटी था गोटे हूँ नोइंग द्वारा माने जानिबा द्वारा आउट हूँ फीलिंग करबा द्वारा आउट हूँ विलिंग बा डूइंग करबा द्वारा देन हूँ परसेप्शन बिलोंग्स टू द नोइंग एक्सपीरियंस है ये हूँ आमर कौन ना experience को a perception belongs to the knowing experience it is cognitive process है ये गोटे हूँ cognitive process it consists in our cognition or knowledge of objects then हूँ perception means the knowledge of object which comes through sensation है perception कौन perception हूँ आमर जो गोटे वस्तुर तार वस्तु उपरे ज्ञान को आम बुझाए कौन कहू आम परसेप्शन कहू बा धारणा कहू आ कौटी द्वारा आसता है ना ये व्हिच कम्स थ्रू सेंसेशन ये सेंसेशन द्वारा होता है देन जो द सेंसरी क्वालिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट एंड द कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसेप्शन इट फॉलोज दैट परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशन तो आमर ये धारणार अर्थ हूँ कौन ना वस्तुर ज्ञान जहाँकि सेंसेशन मध्यम आसी था है देन हूँ ये कौन या क्या आमर जो वस्तुर ये आमर सेंसेशन बा संवेदनशीलता सहित जड़ित तेणु आमर परसेप्शन इक्वाल टू सेंसेशन प्लस मीनिंग संवेदनशीलता प्लस अर्थ इक्वाल टू परसेप्शन बा धारणा देन डेफिनेशन कौन ना अकॉर्डिंग टू wood earth perception is the process of getting to know objects and objective facts by the use of senses है तो आमर जो सेंसेस रही इंद्रिय गुड़िक रही व्यवहार करी वस्तु बा ऑब्जेक्ट्स गुड़िक विषय जानवा को आम कौन कहू ना परसेप्शन बोली कहू देन हूँ अकॉर्डिंग टू जालोटा जालोटा कौन ना परसेप्शन इज दैट मेंटल प्रोसेस बाय व्हिच वी गेट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्ट्स तो जालटा कौन कहले ना जालटा कहले धारणा होउची एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ द्वारा आम कौन करूँ ना विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव्स फैक्ट्स विषय आम कौन कर ना ज्ञान पाई था जानी पाई था देन हूँ डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन अनुध्यान धारणार विकास कौन देयर आर 3 stages in the development of perception गोटे स्टेज हो स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन देन हो स्टेज ऑफ assimilation देन हो स्टेज ऑफ symbolic
परसेप्शन है यही सब रहा आमर परसेप्शन तार 3टा स्टेजेस कौन कौन से गुड़ी को देखी नियंतु ये हूँ स्टेज 1 स्टेज 2 देन हूँ स्टेज 3 देन पढ़ा आम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डिफाइन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कौन ना ए कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस और द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्जिस्टिंग आइडियाज है माने एक धारणा होउछि हमर एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता किंबा विद्यमान चिंताधारार परिवर्तनर फलाफल को आम कौन कहू ना आम कहबू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ए कॉन्सेप्ट कहू देन होउछि ए कॉन्सेप्ट इज जनरलाइजेशन दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज है तो आमर विभिन्न प्रकार इनफॉरमेशन को ये ऑर्गेनाइज करि पारे हमर कांसेप्ट हेल्प्स करे देन हो जो देना पड़े हमें डेफिनेशन कौन फास्ट हो मॉर्गन को मत कौन ना कांसेप्ट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉमन ए प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स ये कौन कले ना कॉन्सेप्ट बा धारणा होउछि वस्तु किंबा घटना गुड़िकर एक साधारण संपत्ति को प्रतिनिधित्व करिपार एक प्रक्रिया देन होउछु मून अकॉर्डिंग टू मून कौन कहले ना कॉन्सेप्ट इज ए प्रोसेस व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिमिलरिटीज इन अदरवाइज डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स सिचुएशंस और इवेंट्स तो धारणा होउछु घटना जिनिस बा व्यक्तिर साधारण वैशिष्ट्य बा संपर्कर भेदवाद प्रक्रिया हला देन होउछु हमें पढिबा मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन धारणा गठनर अर्थ कौन देन फर्स्ट हो कॉन्सेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट माने एक धारणा होउछु गोटे वस्तु विषय आमे जहा किछि जानिछु बुझि होउछि तो इट रिफर्स टू ए जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट पर्सन्स और इवेंट्स यह कौन गोटे वस्तु व्यक्ति बा घटना विषय रे एक साधारण धारणा को ये कौन करे ना सूचित करि थाए देन हो इट स्टैंड्स फॉर ए जनरल क्लास एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्सन इवेंट हला ये कौन करे ना गोटे इट स्टैंड्स फॉर ए जनरल क्लास एंड नॉट फॉर ए एवं यह कौन गोटे निर्दिष्ट वस्तु बा व्यक्ति पाई ये कौन कार्य करे नहीं देन होचु देयर आर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स such as cat tree chair etc concept of persons such as mother indian negro etc then होचु the concept of qualities such as honesty goodness obedience etc ए गुडे को सब रहला कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट गुडे फॉर एग्जांपल द चाइल्ड perceives a black cow at the first time and is told that it is a cow. He tries to form an idea about it. In the beginning the idea is very particular in nature तो ए सब एटा रहला हमर मीनिंग ऑफ कांसेप्ट फॉर्मेशन देन हमें पढिबा नेचर ऑफ कांसेप्ट रो तार नेचर कोन बा तार प्रकृति कौन है तो इट इज नॉट स्टैटिक इट इज ऑलवेज चेंजिंग है यह कौन ये हूँ स्टैटिक नुह बा स्थिर नुह यह हूँ आमर सर्वदा परिवर्तनशील देन हूँ it is not common for all different people may have different concept about the same object or event है ये है समस्त समान नुह है तो विभिन्न प्रकार वस्तु बा इवेंट्स को लेकिन विभिन्न प्रकार लोकंकर तांकर कांसेप्ट मध्य अलग अलग होता है देन कौन इट इज ए पार्ट ऑफ थॉट ऑफ प्रोसेस है ये आम चिंता प्रक्रिया गोटे अंश देन हूँ इट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज है आमर विदाउट लैंग्वेज ये फॉर्म हो पारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस देन हूँ इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द common features it is very useful in recognizing naming and identifying the objects or persons or events बुझी देन पढ़ा आमर टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन आमर फॉर्मेशन हूँ तीन प्रकार गोटे हूँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस गोटे हूँ इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आउट हूँ फॉल्टी एक्सपीरियंस देन हूँ आमर प्रोसेस ऑफ concept formation the process of concept formation has 3 important phases आमर तीन प्रकार फेजेस रही गोटे हूँ परसेप्शन गोटे हूँ एब्स्ट्रैक्शन आउट हूँ जनरलाइजेशन तो यहाँ रहा आमर कौन ना concept formation